ये भी नहीं कर सकते, हम मूर्ति पूजा भी नहीं कर सकते। कहीं का प्रमाण इनके पास? मूर्ति पूजा हमने नहीं करनी, कहीं प्रमाण है इनके पास? हाँ जी, आप लोग बताइए, मूर्ति पूजा नहीं करनी, इसका कोई प्रमाण है आपके पास? हाँ बताइए, आप बताइए। जी हाँ, मूर्ति पूजा के लिए भी शास्त्रों में मना किया गया है, जैसे कि श्रीमद् देवी भागवत महापुराण द्वितीय खंड 9वां स्कंद और अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 38 से 42 में मूर्ति पूजा का पूर्ण रूप से खंडन किया गया। और उसी के साथ साथ गरुड़ पुराण के धर्मकांड प्रेत कल्प के अध्याय नंबर 38 और श्लोक नंबर 11 में भी मूर्ति पूजा का खंडन किया गया है। जैसे कि मूर्ति पूजा का खंडन श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम खंड 3रा स्कंद अध्याय 29 श्लोक 21 से 22 में भी बोला गया है। मूर्ति पूजा के लिए साफ मना किया गया है। जैसे कि हमने इतने सारे प्रमाण इन लोगों को दिए, मगर ये लोग हमें उसके अपोजिट में एक भी चीज नहीं बता पाए। इससे तो यही सिद्ध होता है कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो ऑथेंटिक है और ये सब लोग जो है वो झूठे हैं। आई सपोर्ट स्टडीज ऑफ वेदास, गीता, बाइबल, गुरु ग्रंथ, कुरान, हदीस, and in the light of it, creation worship is not allowed, only creator worship is allowed. To the first point related to La ilaha illallah, actually it is the Brahma Sutra of Hinduism mentioned in Rig Veda and Shvetara Upanishad, which says Ekam Braham Ditya Naste Nih Naste Kinchan. God is only one, not the second, not at all, not at all, not in the least bit. So Sambit Patra and RSS fellows should get educated from the religious scriptures of Hinduism and should not object to La ilaha illallah, rather they should start saying it from now onwards. Shri Krishna says, Bhagavad Gita chapter 7 verse 20, worship the only creator, not the demigods and creations. Bhagavad Gita chapter 18 verse 36, submit your will to the will of only God. So start doing that, worship only of God and just have peace and harmony. Why? There is no image of God which you can make. Bhagavad Gita chapter 7 verse 20 says, Shri Krishna says, if you worship Sambhuti, you will go to hellfire. Sambhuti means created things. So Shri Krishna, Bhagavad Gita and Vedas clearly says, no idol worship, no creation worship, सबका मालिक ईश्वर भगवान एक है. That's what the Rigveda says, that's what Quran says. Veda says, na tasya pratimasti, there is no image of God which you can make. Those who are trying to make the image of God, they are not Hindus, going against Hinduism. Subramanian Swami does not have the knowledge of Hinduism, nor have the knowledge of Indian Constitution, because of that making false claims. Hinduism says, na tasya pratimasti, there is no image of God which you can make. In Yajurveda chapter 32 verse 3. I want to say that, follow the Vedas and the Gita, forget about making statues of only God, and you cannot do it because Veda says, na tasya pratimasti, there is no image of God which you can make. And Shri Krishna says in Bhagavad Gita chapter 7 verse 20, if you make demigods, you will go to hellfire. Any Hindu which does not abide Gita and Vedas is a fake Hindu. And both the scriptures says, worshipping the creation, making idols leads to hell. Shri Krishna says that in chapter 7 verse 20 Bhagavad Gita. Yajurveda chapter 32 verse 3 says, there is no image of God which you can make. So anyone doing so is a fake Hindu going towards hell. In this context, BJP and RSS are the top class fake Hindus.